Hello dear students, welcome you all to LawPrime Tutorials online platform. So I'm here again with another session of English. So as you know, we are continuing with the session how to prepare English section for CLAT, AILET, NLU Delhi and other law entrance exams, right? So that's what we are conducting one by one. So this is the second session. Last session we discussed about on the basis of all the sample papers and everything available in the market, we discussed how to prepare. We discussed some steps and all, and then we also talked about how to read. That is what we discussed, right? And then we also discussed about all those planned reading stuff, because when it comes to CLAT, the English section is obviously, you all know, for CLAT, it's quite different. It's no longer the same story, right? CLAT, it's a different story altogether now, because CLAT has all the passages. So questions will be based on those passages. There will be 5-7 passages. You have to read longer passages, 400 plus words, and then answer the question. So obviously you should have a very good reading skill. When I say reading skill, you must be in a position to read it properly in a lesser time and comprehend it and understand the passage. तो इस तरह से you'll be able to answer the questions, right? And CLAT section में English section को master करना, the comprehension skill is going to be critical for all the sections almost, right? So CLAT students must devote more time to reading skill in order to improve and enhance the reading skill, and at the same time familiarizing with the question types and all, right? So it actually, if the CLAT students, they are giving more time to this section, they are actually improving upon this. So obviously that's going to be handy in every section, the kind of paper we have now. लेकिन अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्स की, लाइक AILET अभी भी नॉलेज बेस्ड है, उसमें अभी भी उसी तरह के क्वेश्चंस, करेक्ट यूसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, antonyms, synonyms, these all stuff, right? Questions still asked, right? When so अलग-अलग questions इस तरह से. So that's where the approach is different. But otherwise, if I say, if I talk about the English section per se, so obviously every exam, जहाँ भी, जिस किसी भी exam में, if English language is being tested, so obviously there will be probability is that there are 3 types of questions. One could be correct usage related questions. ये possibility है कि correct usage से related questions हो. दूसरी पॉसिबिलिटी होगी vocab related questions होने की, and third comprehension. This is the possibility in any exam, any test for that matter. The question pattern might be different, question level might be different, the way the questions are being framed and all, but otherwise broadly speaking this could be 3 types of questions everywhere in every entrance or even any test, any other competitive exams, right? Correct uses may all those questions like error finding, spot the error, fill in the blanks, double fillers, sentence improvements, all these questions obviously will fall under correct uses category. And when it comes to vocab, all the questions like antonyms, synonyms, one word substitution, in all these questions, analogies and all, anagrams and everything, that all will fall under this section, right? Vocab. And then comprehension simply means to understand. So obviously all the questions which are RC related questions, are closed test type of questions, or rearrangement or arrangement type of questions, that all will fall under this. Even if you're preparing for any other like IP MAT and other exams, in every exam, I mean, it could be anything out of these 3-4 options. It could be even sometimes paragraph fillers and all, starters type of questions. That all will be based on the understanding of the language. So that all will fall under the category comprehension. So if we categorize broadly, अगर हम broadly categorize करें, तो किसी भी competitive exam या फिर जो भी हमारे इस तरह के entrance exams और test prep है, उन सब में broadly these are the 3 types of questions we see. इनको प्रिपेयर करने की सबकी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी है. अगर हम बात करें करेक्ट यूसेज की, ऑब्वियसली इट शुड बी एन अप्लाइड मेथड वेयर इन थ्रू कॉन्वर्सेशन वी कीप लर्निंग. दैट इज द बेस्ट मेथड. अदरवाइज रूल्स वगैरह भी एक तरह से करने का एक तरीका है,
बट वो थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाता है, तो स्टूडेंट्स समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन दैट. सो इट्स बेटर एक्चुअली दैट यू कीप टॉकिंग, उस तरह से बातचीत करते हुए, ढेर सारे एग्जाम्पल्स कोट करते हुए हम अप्लाइड तरीके से बात करेंगे, थोड़ा लॉजिकल मैनर में, तो करेक्ट यूसेज में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं दैट गेट्स कवर्ड. क्योंकि ज़्यादातर स्टफ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को पता होती है, कुछ बातें जो नहीं पता उनमें कुछ करना नहीं है, बस हम ऑब्वियसली यू कीप टॉकिंग, whoever has the experience, जिस मेंटोर के पास एक्सपीरियंस होगा, बार बार मतलब बहुत सारे पेपर्स देखा होगा, who has been preparing the students, उनको पता होता है किस एरिया से क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, and what are the important sections, what are the important areas, so you can just talk in a applied manner and it will be a logical learning, right? It will be subtle. And when it comes to vocab, obviously vocab requires a very sustained approach. It should be a very subtle approach, then only you'll be able to continuously go ahead with the vocab, because it takes time. It obviously takes the methodology, which should be logical. Otherwise there is one traditional method which everybody keeps suggesting you कि रोज का पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, और बहुत सारी series and serials and all that, movies and everything, English movies देखो, read novels and read whatever comes to your way, and that is one way to improve vocab. But that is the way when you are in the lower classes, when you have a lot of time, ample amount of time, then in that case obviously you can go ahead with this. When read newspaper and write 5 words every day, I mean, that is all different thing. But अगर एग्जाम देना है, you have limited time, and I mean in a very few months you have exam nearing, so in that case this approach is not advisable. It should be very focused approach and very planned one, and that's where comes some approach which I told you earlier, like root words and all that we discussed earlier as well. So we'll discuss now here root words, linking, how you do the theme linking, how you patch up all those words with the help of batching up with the help of subject matter, कुछ science related words, कुछ economy and social sciences related words. I mean, all these we just keep clubbing them together, and that approach works very fine, right? Root words, prefixes, suffixes, and all that. So it should be a very a logical approach, and at the same time a very consistent approach, right? That is what we use. So obviously I'll tell you that once I come to that section. Now coming back to comprehension, here again there are a lot of techniques actually to improve upon the understanding and answer these questions, types of questions and everything. That also we'll be discussing. अब यहीं पे जब 3 सेक्शन ये जो मैंने बात की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जब बात क्लैट की आती है, सो क्लैट में स्पेसिफिकली इस तरह के क्वेश्चंस, करेक्ट यूसेज वाले क्वेश्चंस, स्पेसिफिक करेक्ट यूसेज रिलेटेड क्वेश्चंस माइट नॉट बी देयर, विल नॉट बी देयर इन द न्यू जो नया हमारा सिलेबस, नया अप्रोच है, क्वेश्चन का नया पैटर्न है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस उतने नहीं दिखेंगे, है ही नहीं फिलहाल. लेकिन questions जो है obviously there will be comprehension based or passage based questions, reading comprehension, and vocab will always be helpful. So this section and this section becomes important. So if you in a sustained manner continuously if you're doing these 2 sections, so it will improve actually your understanding. And for those students, खासकर उन students का कि जो बच्चे vernacular board से आते हैं या फिर state board से आते हैं और वो CLAT के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए इन 2 सेक्शन पे बहुत ही ईमानदारी से काम करना जरूरी है, राइट? वेरी ऑनेस्टली दे मस्ट वर्क ऑन दीज 2 सेक्शंस, क्योंकि ये दोनों सेक्शन पे ईमानदारी से काम करना सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि और दूसरे सेक्शंस जो है क्लैट एग्जाम में उनको भी इम्प्रूव करेगा. सो इन दोनों सेक्शंस को, इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को एड्रेस करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो कि हम क्लास में बताते हैं, वो केवल इंग्लिश सेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि हर सेक्शन में काम आएगी. खासकर जो स्टूडेंट्स टियर 2 सिटीज से या बहुत अच्छी इंग्लिश जिनकी नहीं है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है, और they come from the state board or vernacular board and all, उन बच्चों को खासकर इन 2 सेक्शन पे मेहनत करने की जरूरत है और उन सारी स्ट्रैटेजीज को रिलीजियसली फॉलो करने की जरूरत है. ऑल दो स्टूडेंट्स, इवन द टियर 1 सिटीज जो बहुत अच्छी जिनकी लैंग्वेज नहीं है, स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड एट लैंग्वेज, they are in the different league, उनको थोड़ी सी ब्रश अप की जरूरत है, that's all, under the mentorship. But otherwise all those other students, obviously this is an opportunity to improve upon this, right? So you must take this as an opportunity to improve on that, and you'll definitely improve. That is the reason we always believe early starters will always have an edge. So that's what we keep saying. इसी वजह से I keep advocating, we all advocate actually, कि preparation, entrance की preparation 11th standard से शुरू कर दो. If you don't have the time to go for physical classes, offline में नहीं possible है,
join something online guidance, online mentorship, our online batch. We do have the online batch. So online batch join karo and work under the mentors, right? Who knows about the exam and everything, and start preparing slowly, gradually. Because if you spread your preparation in a longer time, you'll not even, unknowingly, unconsciously, you'll be prepared once the exam comes near. But otherwise, if you leave that, नहीं ठीक है बाद में देखेंगे, so बाद में it's only the panic, and the result will also might go negative. Most of the time it happens, right? तो कहने का मतलब ये कि दोनों सेक्शन को स्प्रेड करना है. इस वजह, ये भी एक वजह है कि हम अपने बच्चों को बार बार सजेस्ट करते रहते हैं कि अर्ली शुरू करो. 11th में पहुंचते ही you start working on this, because even if you're not decisive yet, you join a comprehensive batch. जहाँ पे कि we do have the comprehensive batch wherein we train the students on the not only the LawEntrance exams and even the IP MAT and all, IMNDOR and everything, other exams. We do train them. So कहने का मतलब ये, when you can, and even the CUET some portion. So you can join any of those batches. The comprehensive preparation. But start your preparation when you are in 11th standard. ये वाला एग्जाम्पल देके मैंने ये बात फिर से हाईलाइट करने की कोशिश की है कि खासकर जो स्टूडेंट्स की जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज को उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, या फिर जो स्टेट बोर्ड से हैं, वर्नाकुलर बोर्ड से हैं, या टियर 2 सिटीज से हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट दे व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, they all must start the preparation early, because these two sections becomes very critical, right? Now let's move further. ये सब बातें हम कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर. प्लान रीडिंग का इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ. न्यूज़पेपर कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से पैसेजेस हैं, खासकर क्लैट स्पेसिफिक बात है. दिस इज ओनली फॉर क्लैट, मोस्टली फॉर क्लैट. में पैसेजेस दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं लेकिन उतने नहीं होते, इसलिए वहाँ पे उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती. बट व्हेन इट कम्स टू क्लैट स्पेसिफिक पॉइंट्स, ऑब्वियसली क्लैट की एनालिसिस में हम देखते हैं कि कहाँ से पैसेज उठाए गए हैं, किस तरह के टॉपिक्स हैं. तो दिस इज व्हाट वी मस्ट बी वर्किंग ऑन, right? You must read at least 1 or 2 passages, 1 or 2 articles every day. Wherever you pick it from, there are multiple sources, not only the newspaper. There are magazines, online magazines, and so many things. I mean, actually, we keep talking about in this session. कहीं से भी उठाओ एक या दो पैसेजेस इस तरह के टॉपिक्स से, जो इस तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड हो, जिस तरह के हमारे एग्जाम में पैसेजेस आ रहे होते हैं क्लैट के एग्जाम में, एंड स्टार्ट रीडिंग. एंड दैट टू व्हेन यू गो इन 11th. 1 or 2 passages, reading 1 or 2 passages, एक या दो पैसेज पढ़ना is not a difficult task. It's very easy. And if you do with your mentor who keeps just discussing in every class, it becomes easier because you start improving upon that, right? So that is what it is. कहने का मतलब ये रीडिंग वाला सेक्शन पहले भी बताया जा चुका है कि क्लैट के जो पेपर्स हैं उनको जब हम एनालाइज करते हैं हमें ये बात समझ में आ जाती है कि क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से पैसेजेस उठाए जा रहे हैं. एक बार जब हमें सोर्सेज पता चल जाते हैं, इसके बाद हमें कुछ खास नहीं करना होता. You can pick those kind of passages, those kind of subject matters from anywhere, either the newspaper or any online magazine or something. You can pick from anywhere and at least do one passage every day. That would be enough. It will not take more than half an hour, trust me. 15 minutes I think will be enough, and keep doing it under the mentorship. That's going to help once you go in 11th. vocab की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि vocab में क्या होता है. ऑब्वियसली हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा कि लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, अराउंड 60% वर्ड्स आर एक्चुअली फ्रॉम हियर एंड देयर. डिस्कस दैट ऑल. और ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इस तरह के वर्ड्स खूब दिखते हैं हमें इंग्लिश में, तो वो चीज़ें भी उस पर हमें काम करना होता है. फिर लिंकिंग पे हम काम करते हैं, थीम लिंकिंग वगैरह. थीम लिंकिंग की अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में अगर हम शुरुआत में देखें एंटोनिम्स सिनोनिम्स में, तो ए से कई सारे वर्ड दिए होते हैं. अबैंडन, ए से शुरुआत होती है, लेटर ए के वर्ड से. अबैंडन, अबेट, अबेट एंड ऑल दैट, इस तरह से. इफ वी पिक वन वर्ड लाइक अबेट, and if I ask you what is the synonym of this word, tell 5 synonyms. So ज़्यादातर स्टूडेंट्स, एक तो बहुत स्टूडेंट्स को इतनी बार खासकर हर बुक में होता है सेम सेट ऑफ वर्ड्स, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स बता नहीं पाते. बट अगेन इफ you can type the chat box and I'll see that. Okay, all right. Now, so abate का मतलब फिलहाल, let me tell you, मैं ही बताता हूँ. एक का मतलब है डिक्रीज, कम करना, डिक्लाइन करना. तो ये सब आसान से वर्ड है. डिक्लाइन, डिक्रीज, लेसन, डिक्लाइन, डिक्रीज, लेसन, रिड्यूस, इस तरह से एक तरह से ये इसके मतलब वाले वर्ड्स हैं. लेकिन ये सारे वर्ड्स आसान से हैं. दीज आर इजी वर्ड्स, राइट. इसी से
तरह के और भी वर्ड्स हैं, जैसे मान लो मैं बात करूं वेन, dwindle, keep saying that out, recede, ebb, इस तरह से these are some more words, right? And इनका सबका मतलब भी है कम करना. But what we see, the link, अबेट के ये easy वाले words हैं जो synonyms हैं, और ये difficult वाले words हैं और ये भी synonyms हैं. मोस्टली हम ऑप्शंस में क्या देखते हैं कि इस तरह के वर्ड्स हमें ज़्यादा मिलते हैं, थोड़े ठीक ठाक वाले, अच्छे वाले वर्ड्स. इजी वाले कम मिलते हैं, पहले ज़्यादा मिलते हैं इजी वाले. तो अभी होता क्या है, अगर हम केवल बुक से 2 4 5 सिनोनिम्स इस तरह से तैयार करेंगे अबेट के, तो इट माइट हैपन कि एग्जाम में हमें उस तरह के ऑप्शंस ना मिले, या फिर वैसा ऑप्शंस एक हो, बाकी सारे 2 3 ऑप्शंस जो हों वो डिफिकल्ट वाले हो थोड़े. दैट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट? दैट इज द रीजन you have to pick one word and prepare whole theme of it, the easy words and even the difficult ones, all, right? That's what it is. That is what the theme is all about. So we keep working every day in this, in the class, this way. So इस तरह से एक लिंक बन जाता है इन दोनों तरह के वर्ड्स में. मतलब डिक्लाइन, डिक्रीज, लेसन, रिड्यूस, इन सबका भी मतलब कम करना. वेन, ड्विंडल, सीड, एब, इन सबका मतलब भी कम करना. रिलेंट वगैरह सब इसी में ऐड कर दो and all that, right? इन सब का मतलब भी कम करना. So ये सब भी अबेट के सिनोनिम्स हैं और ये भी अबेट के सिनोनिम्स हैं. But again there is a link between all of them. सब में लिंक है एक, तो ये थीम है. इस तरह से हम एक वर्ड पिक करेंगे, that will become a theme. कम करने वाली, मीनिंग वाले, हैप्पीनेस वाले सारे वर्ड्स, इस तरह से, right? That's how it goes. That's how theme works. Word families, we discuss batching up and all. एक सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वर्ड्स को एक जगह रखना, वर्ड families क्रिएट करना, तो उसमें भी एक लिंक बन जाता है. ये सब रेगुलर करने वाली चीज़ है, कंसिस्टेंटली इन द क्लास. इसी वजह से मैं कहता हूँ अपनी जो लैंग्वेज की प्रिपरेशन है खासकर, अगर इफ़ यू एमिंग फॉर एनी एंट्रेंस एंड इवन वंस यू गो टू द कॉलेज, अब कॉलेज में कोई इतना ज़्यादा nobody will be telling you again and again that improve on the language, but if you're good at language, that is going to be awesome, right? So that is the reason, this is the time actually when you can work upon the language, and it will have manifold benefits, not only twofold, manifold. One, entrance. Any entrance you go, there is a language test, right? Every entrance has the language test. Be it CUET, be it IPMAT, be it CLAT and other law entrance exams, anywhere. And even if you plan to go abroad, SAT and all, सब जगह एक तरह से language test will be there. So if you improve upon that, once you go in 11th, that will be helpful, for sure. right? इस पे काम करना है. Mnemonic techniques भी बहुत सारी funny techniques, audio visual techniques वगैरह भी हैं जो vocab learn करने के लिए हमारे काम आती हैं. हम सबको पता है vocab सभी के लिए ज़रूरी है, इस वजह से हर एग्जाम में आता है, चूँकि कंपटीशन वगैरह में भी आता है. तो हम देखते हैं बहुत तरह की टेक्निक्स, बहुत सारे फनी लिंकेजेस वगैरह भी हैं जो काम करते हैं. तो उससे भी अगर हमें मदद मिल रही, 1000 वर्ड्स की बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, राइट? जो कि न्यूमोनिक टेक्निक्स और इन सब पे, खासकर जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं. देखो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, अनलिमिटेड वर्ड्स तो है नहीं, हम सबको पता है, राइट? तो खासकर जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड बुक्स भी मार्केट में बहुत सारी हैं, जिन पे जो लिंकिंग और न्यूमोनिक टेक्निक्स पे बेस्ड है. तो अगर वो काम करती है तुम्हारे लिए, यू कैन बाय दैट, बट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट? सो डोंट लीव दिस. सब्जेक्ट मैटर एंड प्रोफेशन रिलेटेड वर्ड्स, बुक्स भी कुछ वर्ड पावर मेड इजी वगैरह कुछ बुक्स हैं, इनकी भी मदद ले सकते हैं. इनसे थोड़ा आइडिया मिलेगा किस तरह से ये न्यूमोनिक में खासकर लिंकिंग वगैरह काम करती है. एटिमोलॉजी का तो मतलब ही होता है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. तो ये एक ब्रॉडर सेट हुआ, इसी में सब आ जाएंगे. तो उसमें रूट वर्ड, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, इसी को हम कई बार PRS मेथड्स बोल रहे हैं. इससे अराउंड 150 रूट वर्ड्स वाले तो हम क्लास में ही करते हैं. 150 रूट वर्ड्स के साथ अगर हमने वर्ड्स किया और एक रूट वर्ड पे अगर 10 वर्ड भी मान लें, 10 नहीं बल्कि 20-30 भी होते हैं, 10 वर्ड भी मान लें, so obviously 1500 plus words you will be doing in the class through this method. And then there are some groups, homophones, paronyms, homonyms, इनकी मदद से भी हम vocab को लर्न करते हैं क्लास में. तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं जिससे कि हम vocab कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली, so you will definitely improve. यहाँ पे मगअप करने वाली कैसी कोई बात नहीं है, क्रैमिंग जैसी कोई बात नहीं है. It's all techniques, right? Wherein you create links and all. So once the links are there, so obviously brain के लिए important, brain के लिए बहुत आसान हो जाता है इनको रखना. I mean actually they get imprinted in our brain. Whenever you want that will all be available. So this is how we do the vocab, slowly, gradually, right? So I gave you some examples. I think let me give you more examples. जैसे मान लो रूट वर्ड की बात करूँ मैं. So रूट वर्ड जैसे born. Born का मतलब होता है born या ben. You must have heard. इसका मतलब good. It's a French root word. French root word, right?
अब फ्रेंच ओरिजिन रूट वर्ड, इसका मतलब गुड, बेंटेन, बॉन्टॉन सब सुना होगा, राइट। अब इससे इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड एज इट इज यूज होते हैं, अब बहुत सारे वर्ड दूसरे बनते भी हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा के, जैसे बोनाफाइड। अब इसमें बोना इज गुड एंड फिडे इज फेथ, फिडिलिटी, फिड्यूशरी सब इसी में आ जाता है, ये भी एक रूट वर्ड है। सो बोनाफाइड इन गुड फेथ। ऐसे ही बेनिफिशियल, बेनेवलेंस, बेनेवलेंट, बेनाइन, बेनिग्नेंट, बोनांजा, कीप सेइंग दैट ऑल। अभी क्या देखा हमने, बॉन और बेन से इतने सारे वर्ड्स बन रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा वर्ड है मैल, रूट वर्ड या मैला। अब इससे इसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स बनते हैं और इसका मतलब होता है बैड, राइट। तो जैसे मैलाफाइड, जैसे यहां पे बोनाफाइड था, वैसे ही मैलाफाइड, मैला इज बैड, फाइड इज फेथ, तो बैड फेथ, मैलाफाइड। मेलेवलेंस, मेलेवलेंस, मेलेवलेंट, करते ना ऐसे, राइट। मलाइन, malignant, बहुत सारे वर्ड्स हैं। So this is one root word. That's how it functions. That's what we're talking about, root word and prefixes and suffixes. तो हमारा मतलब यही है। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। Crown मतलब time, pan means all. अब जब pan का मतलब है all, तो pandemic, dem मतलब people, pan मतलब all. तो something which affects all people, that is pandemic. Panacea, panacea is like cure of all disease and problems. हर डिजीज, हर रोग और हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदी में कहते हैं रामबाण, पेनाशिया। पेनोरमा, ऑल राउंड व्यू। तो पैंडेमिक, पेनोरमा, पेनाशिया, कीप सेइंग दैट ऑलराइट। पैंटिसोक्रेसी, पैंथीज्म, थीज्म, थियो मतलब गॉड और रिलीजन, राइट, और पैन मतलब ऑल, सो पैंथीज्म, people who believe in all, ideology of believing in all gods, that's something like that, right? So इस तरह से monotheism, mono means one, pan means all. Keep saying that. We'll discuss that once we discuss, as I said, around 150 root words we discuss in the class, slowly, gradually. So obviously it takes time, right? अचानक एक क्लास में होगा तो you'll not be able to retain. So that's the reason it takes time. So that is one thing. Vocab, that's how you do. So this is important for everybody. Even the students who are looking for CLAT and students who are looking for AILET, NLU Delhi, IP MAT, other CUET and other exams. For everybody. Now, correct uses, as I told you, no cramming or mugging up. Cramming or mugging up रूल्स को क्रैम नहीं करना है, बल्कि उनका अप्लाइड मेथड में, अप्लाइड तरीके से यूसेस देखना है। I mean, that's how we do with the help of practical uses, conversation, बातचीत में हम अलग अलग इस तरह से सेंटेंसेस उठाते रहेंगे, and that's how we keep discussing, right? Because otherwise, you know what is tenses, what is the subject verb agreement, what are the voice, what is narration, what is the sentence, what are the clauses, how to structure a sentence, सारे स्टूडेंट्स को पता है, राइट। बट अगेन तो बाकी देयर इज सम गैप, वो हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड मेथड, बातचीत के जरिए। बाकी ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशनल मेथड और प्रैक्टिकल मेथड, अप्लाइड मेथड जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, अप्लाइड मेथड, दैट्स हाउ वी डू, बिकॉज इट बिकम्स ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर टू करेक्ट देमसेल्व्स। Application based approach, वही same thing, applied grammar, and the nitty-gritty of sentence structure and all parts and everything we discuss, all the functions, ये सब भी हमारे लिए important होते हैं, right? All these parallelism, dangling modifiers, inconsistencies, redundancies and all. So it's a broader heads where we commit mistakes. ये कुछ broader heads है जहाँ पे we actually tend to commit more mistakes, जहाँ हम ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो उन पे obviously हम जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, that's how we do. So I'll give you the examples slowly, gradually. जैसे let me just give you some examples right now. I think that will be just a minute. Just a minute. Just take out the board so that I can write properly. It will be easier.
It's taking time. Anyway, so that's what it is, right? So I'll just give you, suppose I give you one sentence. Nothing. That's too much. Think. Okay. Now. Yes. So suppose I give you a sentence here only, because nothing but trees are everywhere. This is just I give you a sentence. Usually when I give the sentence, most of the students, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ट्रीज को सब्जेक्ट मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है आर होना चाहिए वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब जो सही है वो है इज. अब व्हेन यू आस्क फॉर रीजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो द रीजन. इवन जिनको पता भी होता है वो भी कहते हैं नथिंग बट के साथ सिंगुलर होता है, क्योंकि वो रूल्स वगैरह में दिया होता है बुक्स में. लेकिन हम बातचीत के जरिए जब इस तरह से पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं, सबसे बड़ी बात बट का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट? बट का तो एक मतलब होता है, हम सबको पता है, कंट्रास्ट, थिंग्स ऑफ ऑपोजिट नेचर, मतलब विरोधाभासी बातें. तो यहाँ विरोधाभास वाले सेंस में, इस सेंस में ये कंजंक्शन होता है. यहाँ विरोधाभास वाली कोई बात है नहीं. यहाँ पे बात है एक्सेप्ट, ये मीनिंग है इसका बट का, एक्सेप्ट के सिवाय. और इस सेंस में ये प्रेपोजिशन होता है. अभी प्रेपोजिशन है या कुछ और है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है. इसकी मीनिंग है एक्सेप्ट, एक्सक्लूजन है. सो बट के बाद जो भी है दैट इज ऑल एक्सक्लूडेड. और अगर ये प्रेपोजिशन भी है, पहली चीज अगर तुम्हें मालूम है, अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद वाली चीज कभी भी सब्जेक्ट होती नहीं है. दैट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट टू दैट प्रेपोजिशन, right? So this will always be an object to this preposition, because but is a preposition here and but means except. So nothing but trees is everywhere. पेड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं, मतलब पेड़ ही पेड़ है. That's what the meaning is. So subject is nothing. और इस तरह के जितने भी compounds हैं, nothing, something, everything, they all are singular. They all are singular. So if you talk like this and you discuss this कि but का मतलब क्या है, हमें ये पता होना चाहिए. What is the meaning of the but? All these parts of speech which you know, noun, pronoun, adjective, verb and all, ये सब, these all are there to help us. ये हमें मदद करने के लिए होते हैं vocab learning में. मतलब on the basis of their function, place and meaning, जितने भी words हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, उन सबको 8 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है on this basis, on the basis of their function, place and meaning in the sentence. मतलब कहने का 8 क्लासेस जो है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारी मदद करने के लिए थे, लेकिन हम लोग उनको थोड़ा मैकेनिकल बना दिया तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है. हमें लगता है ये तो सब ग्रामर का हिस्सा है, इनकी जरूरत ही नहीं है हमको. बट एक्चुअली वोकैब तो हम सबको चाहिए. वोकैब तो इज बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज, राइट? सो ऑब्वियसली वी ऑल नीड टू इंप्रूव अपॉन द वोकैब, एंड दीज ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वर देयर टू हेल्प अस इन इंप्रूविंग आवर वोकैब. बट एक्चुअली पढ़ते समय हमने इनको इतना मैकेनिकल बना दिया कि इट बिकम्स नाउ इवन डिफिकल्ट. वो बल्कि हमें हेल्प नहीं कर रहे होते. हमें ऐसा लगता है कि दे एक्चुअली यू नो यूं ही है, इनको पढ़ने की जरूरत ही क्यों है. दैट्स व्हाट इट इज, राइट? But otherwise they are there to help us. तो अगर हमें बट पता भी है कि प्रेपोजिशन है, उसका ये वाला सेंस है, ये वाली मीनिंग है, तब भी हमें मालूम होगा कि प्रेपोजिशन के बाद, इमीडिएटली प्रेपोजिशन के बाद देयर इज एन ऑब्जेक्ट. इन हिम, हम कभी इन ही नहीं बोलते. इन हिम, बिटवीन ही एंड शी नहीं बोलते. बिटवीन हिम एंड हर, ये चीज होगा because it's a preposition. कहीं भी preposition हो, in him बोलते हैं हम, in him, in her, in them. This quality is in him. This is how you talk, right? Preposition के बाद हमेशा there is an object to that preposition. That's how it happens. In English language दो ही जगह है जहां हमें objective case चाहिए. एक after a transitive verb और दूसरा after a preposition. बस that's it. और कहीं नहीं चाहिए. So that is how it is, right? यहाँ पे भी हम देख रहे हैं preposition है अगर, तो इसके बाद वाली चीज तो सब्जेक्ट होनी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है. अगर हम उतना डिटेल में जाएं भी तब भी,
अदरवाइज बट का मीनिंग भी पता है तब भी हमारा काम हो जाएगा. एक्सेप्ट, nothing but trees is everywhere, nothing but potatoes is grown here. That's how you talk, that's how you use it, right? So यहाँ पे trees को देख के confuse नहीं होना है. I hope that makes sense. So ऐसी कुछ बातें हम करते हैं, and that's how we keep talking and keep improving and keep discussing. That is how we go, right? मैं ऐसे बहुत example देता रहूँगा. जैसे there are many, right? The mother and not her children has been arrested or have been arrested. So you'll say has because the mother is the subject and not her children, and not के बाद वाली चीज subject नहीं है. I'll give you more and more examples in the next classes to come. अभी तो हम approach की बात कर रहे हैं. Now that's how it is. आज के लिए इतना ही. अभी लगता है हमें कि यहाँ तक की बातें थोड़ी हमें समझ में आई हैं. Half an hour session we done with. So next session we'll be talking about this further. That's all. Thank you. Have fun. See you in the next class.